Hello everyone, I'm Yash Saraf from the StockEdge team, and today we are back again with our StockEdge Smart session. Hope you all are having a safe and steady roller coaster ride this week, because this week market is all about a roller coaster ride. And hope you all have not made big losses and you have maintained your calm. So obviously मार्केट से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है एवरी डे, एंड ये वीक भी कुछ ऐसा ही है. So let's not stop our learning process, and let's start with our StockEdge smart session today. And as you all know, today's topic is StockEdge scans, my combination scans, and trending stocks. Right. So in the today's session, we'll be having three different parts. First, I will be teaching you all about the StockEdge scans, how to use it, how to understand it, and how to select your favorite scans. And then we'll have a small Q&A session, and then I will tell you about the my combination scans, wherein you can make your own favorite combination scans with the help of the available scans. And then again we'll have a small Q&A session, and then in the end I will tell you about the trending stocks, right? And then I will tell you all that how we can enhance our research process, analysis process, how we can increase our confidence, or we can say we can increase our entry exit strategies, or we can better our trades. We can make better trades with the help of using StockEdge scans, my combination scans, and trending stocks in sync, right? So without wasting any time, let's proceed further. So let me all tell you, StockEdge is an EOD platform, as you all know, and StockEdge was the first one in the Indian equities market to launch this concept of screeners, basically scans, right? So this is the scan section over here. And in StockEdge, currently we have 450 plus advanced scans, and out of which 70% of these scans are already free. That is, what I mean is, the 70% of these scans are available to all of our users. Only so few of our scans, that is 30% of our scans, are on the premium side, right? So as we all know, market में बहुत सारे data points हैं. मतलब there are n number of data points available in the market. So obviously हर किसी data point का एक category है. So what we have done in StockEdge is we have categorized all kind of data points available in the market into seven broad categories to formulate scans under those categories. So what are those seven categories? Price scans. Price scan deals about the price action, right? मार्केट में जो प्राइस एक्शन हो रहा है, जो एक्चुअल प्राइसेस है OHLC, उसके ऊपर जो प्राइस पैटर्न्स बन रही है, उसके ऊपर हम लोग प्राइस स्कैन्स बनाते हैं. देन वी हैव वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स. इट टेल्स अस अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्टॉक्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक शेयर ऑफ स्टॉक्स इन द मार्केट्स. देन वी हैव टेक्निकल स्कैन्स. इन टेक्निकल स्कैन्स इट इज ऑल अबाउट द टेक्निकल इंडिकेटर्स. हम लोगों ने कई सारे इंडिकेटर्स को कवर किया है. एज वी ऑल प्रोसीड फर्दर विल लेट यू नो. And then we have fundamental scans, in which we have covered all the fundamental points available. And then we have futures and option scans, strike wise option scans, and then we have candlestick scans. ठीक है. सो अब हम लोग एक एक स्कैन्स की तरफ मैं कोशिश करूंगा कि ऑब्वियसली आई कैन नॉट कवर अप ऑल 70 ऑल 450 प्लस स्कैन. सो मैं हर एक कैटेगरी का कुछ कुछ अच्छे अच्छे स्कैन मैं आप लोग को बताऊंगा, एंड हम लोग ऑब्वियसली बाकी सारे स्कैन्स को भी आप लोग और इवेल्युएट कर पाओगे, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस स्कैन्स. So in the price scans, there are n number of प्राइस स्कैन्स. आप देख पा रहे हो कि कई सारे पीरियोडिक स्कैन्स है, बेसिकली ब्रेकआउट स्कैन्स, रेंज बिहेवियर स्कैन्स, रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन्स एंड ऑल. तो इसीलिए हम लोग प्राइस स्कैन्स के अंदर विल स्टार्ट विद, फॉर एग्जांपल, वीकली ब्रेकआउट स्कैन्स. सो इन स्टॉकेज व्हाट वी एम्फसाइज ऑन इज कि इन स्टॉकेज वी ट्राई टू कीप द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द स्कैन्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू इंटरप्रेट. इसीलिए वेन एवर यू रीड अ स्कैन नेम, you will be easily able to interpret it what that scan is all about. For example, if we understand close crossing last week high, this scan, it clearly tells us कि it will filter out those stocks which has crossed above its last week high and closed above it. ठीक है, it has closed above it. So let's click on this stock. Let's click on this scan, and I'm glad that we have some of the output in this scan, because कल का जो मार्केट था उसके बाद तो आई डोंट थिंक कि कोई स्कैन कोई स्टॉक्स बचा होगा, बट स्टिल these are very good stocks which have somehow managed to come into the scanners. So let's understand the scans module first.
फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कैन नेम इज क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, आपको ना स्कैन का नाम दिख रहा है. सो वेन एवर यू गो टू अ स्कैन, whenever you go to a scan, and if you are not able to understand what that scan is all about, then what you can do is you can click on this I button. In this I button you will get to see the meaning and the significance of the scan. You will get to see meaning and significance of the scan, what this scan is all about, what is the significance and importance of the scan, how to interpret the stocks getting filtered in the scan, right? And in most of the scans you will also find a small video in which with the help of video you can understand it more better, that what that scan is all about and how we can use those scan. ठीक है. सो अब ये था स्कैन के बारे में. अब पहले मैं आप लोग को ये मेजर स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ. व्हाट इज दिस मेजर स्टॉक, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा. सो इन स्टॉकेज वी हैव एडवांस फिल्टर्स, वी हैव enabled advanced filters for more further filtration and analysis of stocks. So major stocks is an in-house stockage filter. It is an in-house stockage filter. And what does it means? Major stock implies that it is the combined list of top NSE and BSE 500 stocks. So basically, there are 500 stocks in NSE 500 index. There are 500 stocks in BSE 500 index. So major stocks is the combined list of NSE 500 and BSE 500. ठीक है. सो वाई वी हैव डन दिस लिस्ट, बिकॉज आपको क्या होगा समझ में आएगा कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम और सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, सो यू विल गेट टू नो इट बाय एनालाइजिंग द टॉप 500 स्टॉक्स. एज यू ऑल कैन सी कि सिर्फ 500 स्टॉक में सिर्फ 8 ऐसे मेजर स्टॉक है जो कल के दिन, लेट मी टेल यू दिस डेटा इज ऑफ येस्टरडे, इज एज ऑन येस्टरडे, दैट इज 4 जून. आज का जो डेटा है दैट इज 5 जून. इट विल बी अपडेटेड इन एन आवर और सो एंड यू विल ऑल रिसीव द पुश नोटिफिकेशंस, राइट. सो ये जो डेटा है ये कल तक का डेटा है. सो कल हम लोग को सबको पता है कि कल मार्केट्स में क्या हुआ था. कल मार्केट्स कितना भयंकर नीचे गिरा था एंड हाउ दी मार्केट्स हैव कोलाइडेड एंड स्वाइप्ड अप ऑल दी गेन्स इन द मार्केट. सो अगर कल मार्केट अच्छा होता तो ये जो लिस्ट है आपको दिख रहा है, ये 8 नहीं होता, इससे कहीं ज्यादा होता. बट जस्ट बिकॉज कि कल मार्केट में इतना भयंकर ब्लड बात हुआ था एंड इतनी ज्यादा फॉलिंग आई थी प्राइसेस के अंदर, जिसकी वजह से नन ऑफ द ओनली 8 आउट ऑफ दोस टॉप 500 स्टॉक्स कुड मैनेज टू गिव अ पॉजिटिव रिटर्न, टू गिव अ पॉजिटिव रिटर्न. जस्ट होल्ड वन सेकंड. यस, अपोलॉजीज फॉर दी पॉज. सो जैसे मैं बोल रहा था कि कल के जो मार्केट थी उसमें कल मार्केट में भयंकर कई ज्यादा गिरावट आई थी, ड्यू टू विच only 8 out of those top 500 stocks could manage to close above their last week high and were providing a strong performance on the charts. तो अभी देख पा रहे हो कि जो सारे के सारे 8 स्टॉक है, सारे के सारे या तो एफएमसीजी स्टॉक्स है एंड कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट स्टॉक्स है, राइट. तो इसीलिए कल खाली एफएमसीजी एक सेक्टर थी जो पॉजिटिव में थी, वरना बाकी सारे सेक्टर्स, ऑल ऑल अदर सेक्टर्स वेयर इन रेड. तो दैट इज द मेजर रीजन कि आपको खाली टॉप 500 स्टॉक्स एनालिसिस से समझ में आ जाएगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, राइट. सो मेजर स्टॉक्स का मैंने बता दिया. मेजर स्टॉक्स का आई एम सेइंग इट अगेन. मेजर स्टॉक्स का जो डेफिनेशन है दैट इज इट इज द कंबाइंड लिस्ट ऑफ एनएससी, ऑफ टॉप एनएससी एंड बीएसई 500 स्टॉक्स. ठीक है. सो ये था मेजर स्टॉक. अब अगर आप लोग को और भी फर्दर फिल्टर करना, ऑब्वियसली इट वोंट बी एवरीडे सिनेरियो कि सिर्फ आपको 6 या 7 स्टॉक ही दिखेंगे मेजर स्टॉक में. देयर कैन बी 200 स्टॉक, देयर कैन बी 400 स्टॉक्स. सो उसको और अगर इफ यू नीड टू फिल्टर आउट, इफ यू नीड टू रिड्यूस दी stock on it, and if you need to reduce the stock list, then what you can do is you can filter more of the stocks from these advanced filters. We have filters like NSE stocks, BSE stocks, and NSE FNO stocks. कि अगर किसी को खाली ये देखने की कौन से ऐसे FNO के stocks है, that is futures and options, that close above last week high, then they can apply this NSE FO filter. Then we have Nifty 50 stocks.
जो लोग इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मार्केट में नए आए हैं एंड दे ओनली वांट टू ट्रैक और ट्रेड इन निफ्टी 50 स्टॉक्स, देन दे कैन अप्लाई अ फिल्टर ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स. Same way Nifty 200, Nifty 500. And if you want to apply a filter of BSE PSU stocks, then also you can apply a filter of BSE PSU stocks. सेम वे में हम लोग के प्राइस प्राइस के फिल्टर्स है कि मेनी पीपल हैव प्रेफरेंसेस ऑफ प्राइस व्हेन दे स्टार्ट टू ट्रेडिंग इन शेयर, सो यू कैन filter the stocks on the basis of prices. Then we have market cap categories: large cap, mid cap, small cap. Then we have market cap ranges as well. If people want to trade above only 10,000 crore and above stocks, then they can do that. And we also have filters of sector stocks, इन विच अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर को फिल्टर करना है कि कौन से स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर आज मूवमेंट आया, या कौन से ऐसे सेक्टर है जो लास्ट वीक के नाम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई दिस फिल्टर ऑफ सेक्टर्स, राइट. सो ये अभी हम लोग ने एडवांस फिल्टर्स को समझा. ऑल्सो वी ऑल्सो प्रोवाइडेड डाउनलोड ऑप्शन. आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके यू कैन डाउनलोड द एंटायर शीट एज पर दी set filters at that time, and this entire sheet will get downloaded in an Excel. and उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अपना कोई फर्दर एनालिसिस करना है और यू नीड टू सेव दैट डेटा और यू नीड टू अप्लाई सम फॉर्मूलाज और ऐड सम मोर डेटा, देन यू कैन डू दैट इन योर एक्सेल एंड यू कैन इंक्रीज अ फर्दर एनालिसिस. ठीक है. सो बेसिकली हम लोग ये समझते हैं जैसे क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. अब हम लोग इस स्कैन पे आते हैं. तो इस स्कैन का बेसिक सा मतलब है कि अगर किसी स्टॉक का लास्ट वीक का ही 100 रुपीज था एंड वो उसके नीचे क्लोजिंग आया, फॉर एग्जाम्पल 90 पे क्लोजिंग आया, एंड कल अगर इस उस स्टॉक ने 90 से 100 को क्रॉस करके 100 के ऊपर का क्लोजिंग दिया, देन दैट स्टॉक विल गेट फिल्टर्ड इन दिस स्कैन. ठीक है. तो सेम वे हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ हुआ. उसका लास्ट वीक हाई था 2409. कल इस स्टॉक ने 2409 को नीचे से क्रॉस करके ऊपर में 2496.30 का क्लोजिंग दिया, विच इंडिकेट्स दैट दिस स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग इन द करंट वीक. ठीक है. इररिस्पेक्टिव कि आज मार्केट्स में रिकवरी आए जो भी आए, बट इफ यू चेक हिंदुस्तान यूनिलीवर, यू विल सी दैट दिस स्टॉक अगेन मेड अ गुड मूवमेंट टुडे एज वेल. ये स्टॉक 4% इंक्रीज पे क्लोज हुआ है, एंड डिस्पाइट इस स्टॉक के अंदर स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अच्छी मूवमेंट आई थी, जो 27-23 का हाई बना था, एंड उसके बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई एंड इसमें नीचे गिर गया. सो व्हाट यू कैन सी इज कि अगर आपको वीकली लेवल पे अगर आपको कोई स्टॉक्स चेक करना है कि कौन से स्टॉक्स उस वीक में पॉजिटिव है, देन यू कैन कम टू दिस स्कैन ऑन मंडे और ट्यूसडे एंड फाइंड आउट स्टॉक्स जो इस करंट वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग है, राइट. इसीलिए इसमें लिखा हुआ है क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. मतलब these are the stocks which have given a small breakout, a weekly breakout on the basis of last week high levels. ठीक है. अब देन अब आते हैं हम लोग सबसे बेस्ट फीचर पे, दैट इज दिस बैक टेस्टिंग. सो बेसिकली क्या होता है कि आज 450 प्लस कैंस है, राइट. सो आप लोग कुछ भी नो वन ट्रेडर और नो वन इन्वेस्टर कैन keep and track and can check each and every scan on a daily basis. So what you all can do is कि आप जो भी स्कैन में जा रहे हो, and if you find a scan useful and if you find a scan good, then what you can do is you can back test. फॉर एग्जाम्पल आप 27 मई को जाके चेक कर सकते हो कि 27 मई में जो डेटा आ रहा था, ठीक है, उस दिन जो डेटा आया वो सारे स्टॉक्स इन द कमिंग वीक उसके बाद वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ZF कमर्शियल व्हीकल सिस्टम्स. सो ये था 27 में का चार्ट. उसके बाद इफ यू सी नेक्स्ट डे ये स्टॉक फिर इस स्टॉक ने कंटिन्यूड अपवर्ड रैली दिखाई दी, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आया, देन फिर एक अपवर्ड मूवमेंट आया, एंड देन फिर दो स्टॉक मंडे एंड ट्यूजडे नीचे गिरा एंड देन फिर ये ऊपर गया. बट इफ यू सी 27 को जो क्लोजिंग था दैट वाज 16261, ये स्टॉक अभी भी उस क्लोजिंग के ऊपर है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये स्टॉक गिवन अ स्पैन ऑफ 7 days ये स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है, एंड इस स्टॉक ने अपना उस दिन का क्लोजिंग को नहीं तोड़ा है. सी दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट कि आप किसी भी स्कैन में जा रहे हो एंड इफ यू फाइंड द डेटा गुड, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू अ बैक टेस्टिंग कि हाँ इस स्कैन्स का जो डेटा आ रहा है वो एक्चुअली कैसा परफॉर्म कर रहा है इन द कमिंग डेज, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट योर फेवरेट स्कैन्स एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रैक देम ऑन अ डेली बेसिस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्कैन मॉड्यूल. अब मैं आप लोग को और बाकी स्कैन्स बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 52 week breakout scans, 52 week range scans, 2 year, 5 year, all time breakout scans. तो ये सारे के सारे पीरियोडिक ब्रेकआउट स्कैन्स है, राइट. आप लोग ने कई बार ये टर्म सुना होगा 52 week ब्रेकआउट या 1 year ब्रेकआउट.
ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, ऑल टाइम लो ब्रेकआउट। तो अगर किसी भी स्टॉक को आपको ट्रैक करना है कि कौन से स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप इस स्कैन में देखोगे आपको जीरो स्टॉक्स दिखेगा। रीजन भी कि कल के मार्केट में सारे सारे मेजर स्टॉक सारे के सारे ऑलमोस्ट डाउन थे, एंड किसी ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। इसलिए मैं अगर इसको क्रॉस कर दूं तो आई विल सी सो मेनी स्टॉक्स जिन्होंने कल अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। सो दीज आर ऑल वेरी स्मॉल कैप स्टॉक्स, इसीलिए जिनको मार्केट से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या मार्केट कहीं पे जाए, ये लोग का मूवमेंट अलग ही चलता है, इसलिए आपको यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो अगर यही मेजर स्टॉक्स का फिल्टर अप्लाइड होता, इसीलिए आपको कोई जीरो स्टॉक्स दिख रहे थे, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि कल के मार्केट में एक नॉट अ सिंगल स्टॉक आउट ऑफ दो 500 स्टॉक्स हैव मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई और समथिंग लाइक दैट। अब वही अगर आप थर्ड का डेटा चेक करोगे, सो यू विल सी एंड यू विल सी द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। क्यों? क्योंकि मंडे को, दैट वाज ऑन थर्ड, मार्केट्स में बूमिंग हाई एंड मेनी ऑफ द स्टॉक्स हैव मेड न्यू ऑल टाइम हाईज। ठीक है, तो इससे आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट लेवल्स का पता चलता है। लेकिन अगर आप लोग को ये, ऑब्वियसली ये जो 2 दिन था ये इवेंट ड्रिवन मार्केट था, तो लेट्स नॉट डू आर एनालिसिस और डू आर जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग डेज। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी स्टॉक को, अगर मेरे को स्टार्टिंग में एंट्री करना है एंड मेरे को प्री आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मेनी रिटेल पीपल एंड अप डूइंग दिस मिस्टेक कि वो लोग ब्रेकआउट के बाद एंटर तो करते हैं बट दे एंटर एट वेरी हाई लेवल्स, जिसकी वजह से क्या होता है उनका टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, कम रहता है, मतलब रिस्क ज्यादा रहता है रिवॉर्ड कम रहता है। एंड दे एंड अप बाइंग एट हायर लेवल्स, एंड उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड दे गेट स्टक। सो इट्स बेटर टू प्री आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकते हैं। इसीलिए स्टॉकेज के अंदर हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है ऑल टाइम हाई जोन और ऑल टाइम लो जोन। सो व्हाट इज दिस जोन डिफाइंस? ये जो जोन है ये है कि किसी भी हाई या लो लेवल का 15% का रेंज को हम लोग जोन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी स्टॉक हैज एन ऑल टाइम हाई ऑफ 100 रुपीज एंड उसका जो जोन हो जाएगा दैट विल बी 85। सो 85 टू 100 उसका ऑल टाइम हाई जोन है। सो इफ एनी स्टॉक विच इज ट्रेडिंग बिलो 85 एंड क्रॉसेज अबव 85 एंड क्लोजेज अबव इट, मतलब वो 85 के नीचे ट्रेड कर रहा था, 85 को क्रॉस करके 85 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तब हम लोग बोलेंगे कि दैट स्टॉक हैज एंटर्ड इनटू इट्स ऑल टाइम हाई जोन। सो बेसिकली अगर आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक जो भी ऑल टाइम हाई, 2 ईयर हाई, 5 ईयर हाई या 1 ईयर हाई, 52 वीक हाई ब्रेकआउट मारता है या ब्रेकआउट देता है, तो वो ऑब्वियसली अपने जोन को पार करके देता है। वो स्टॉक बहुत पहले से वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा होता है, राइट? इट एक्चुअली शोज दैट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिफोर हैंडेड ओनली, राइट, बिफोर मेकिंग आउट दैट ब्रेकआउट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्री आइडेंटिफाई करेंगे वैसे स्टॉक्स को जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाबर इंडिया। ठीक है, डाबर इंडिया इज वन स्टॉक जिसका ऑल टाइम हाई 658 रुपीज एंड उसका जो कल का क्लोजिंग था दैट वाज 578 रुपीज, जो अभी अपने ऑल टाइम हाई से 12% डाउन है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर डाबर इंडिया के अंदर, अगर कीपिंग इन इंटैक्ट एंड कीपिंग एंड चेकिंग ऑन विद द अदर इंडिकेटर्स एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी एक स्कैन के बेसिस पे, किसी भी खाली एक इंडिकेटर के बेसिस पे वन शुड नॉट ट्रेड और वन शुड नॉट इन्वेस्ट। दे नीड टू अप्लाई मल्टीपल इंडिकेटर्स, मल्टीपल चेक्स, एंड उसके बाद फिर वो उसमें ट्रेड लेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो ज्यादा बेटर होगा। तो एज यू कैन सी डाबर इंडिया में 12% का अभी गैप है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। सो अगर कोई स्टॉक, अगर किसी भी इन्वेस्टर ट्रेडर को लगता है कि डाबर इंडिया कैन गिव एन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट्स और टेक्निकली एंड फंडामेंटली एज वेल, then what he or she can do is they can make a position in Dabur India previously only, or they can track Dabur India कि as soon as they will make an all time high they will enter, so that their risk to reward ratio will be very high। तो इसमें क्या होगा, अगर आप प्री आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है and ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकता है, then what you can do is you can entry at current levels or say 1 or 2% higher, and then you can wait for the stock to retest its all time high levels। अगर वो अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता है एंड वो ब्रेकआउट देता है, देन यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। एंड अगर वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं देता है, देन ऑल्सो यू विल बी इन अ बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें से एग्जिट ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप हायर लेवल्स पे बाई करने से बचोगे एंड आपका जो ट्रेड्स होगा वो बेटर होगा, एंड यू विल बी मोर इन कंट्रोल ऑफ योर ट्रेड्स। ठीक है, so this was all about the how to trade all time high breakout stocks or any kind of breakout stocks। आप जो भी बता दो, मैं आप लोगों को एक और टिप देता हूँ। ठीक है, आप लोग ये हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई भी ब्रेकआउट जब आता है ना, तो वो जितना ड्यूरेशन के बाद आता था, हायर द ड्यूरेशन इज,
from its previous all-time high and current high, the higher will be the upcoming return most probably if given all parameters. तो इसलिए कभी ये होगा कि कोई स्टॉक अभी एक हफ्ता पहले रिटर्न एक ऑल टाइम हाई मारा था एंड वो फिर स्टॉक आज फिर से एक ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो उसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है दैट इज वेरी लिमिटेड. बट कोई ऐसा स्टॉक है जिसने 2 साल पहले या 3 साल पहले ऑल टाइम हाई मारा था एंड उसके बाद आज वो स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है, तो उसके अंदर जो अपसाइड पोटेंशियल होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा. ठीक है. तो दिस वाज वन एग्जांपल. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डाबर इंडिया का बात कर रहे थे, अगर आप डाबर इंडिया को आज ही चेक करोगे तो डाबर इंडिया ने आई गेस आज भी एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है. यू सी, आज भी इस डाबर इंडिया ने 3% 4% का मूवमेंट दिया है. राइट. सो यू सी यू कैन इजीली फिल्टर आउट स्टॉक्स, क्योंकि स्कैन्स के थ्रू आप स्टॉक्स काफी अच्छे से फिल्टर कर सकते हो बिकॉज इट इज ऑल अबाउट डेटा. अब आई नो जो भी क्वेश्चन आंसर्स आ रही हैं, जो भी क्वेरीज हैं, मैं स्कैन्स के मॉड्यूल के बाद मैं सबको आंसर कर दूंगा. आई विल आंसर टू ऑल ऑफ देम. Then we have RS 55 day scans. This scan, as you all know, अगर आप लोग विवेक सर को फॉलो करते हो एंड इफ नॉट देन प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग हिम, फॉलोइंग हिज यूट्यूब वीडियोस एंड सोशल पोस्ट. आप विवेक सर का दिस RS 55 इज विवेक सर मॉडल एंड वो इसको स्ट्रांगली बिलीव करते हैं एंड उनके सारे ट्रेड्स के अंदर, उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ही स्ट्रांगली यूजेस दिस RS 55 इंडिकेटर एंड ही मैनेजेस हिज एंट्री एंड एग्जिट प्लान अकॉर्डिंगली. आप कई बार उनके पोस्ट देखोगे या वीडियो देखोगे तो उन्होंने कई बार अपने RS 55 और RSA मॉडल का जिक्र किया है विच इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन हिज वीडियोस. सो प्लीज गो एंड चेक. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस मॉडल के थ्रू ही ट्राइज टू एंड दिस इंडिकेटर टेल्स अस that which are the stocks that are outperforming or underperforming the benchmark index or sector index, and you can also find out stocks which have started to outperform their benchmark index. For example, Dabur India again, as you can see, Dabur India ने कल ही, डाबर इंडिया का जो रेट ऑफ स्ट्रेंथ था दैट वाज बिलो जीरो एंड कल ही इसका जो रेट RS था वो जीरो के ऊपर चला गया, विच मीन्स इट हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स. ठीक है. इसलिए आप देखोगे आज भी डाबर इंडिया में 4% का मूव आया है. आई एम नॉट सेइंग कि सारे स्टॉक्स में आया होगा, बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है उसके अंदर अगर वो कंटिन्यूड मोमेंटम होता है देन दो स्टॉक्स डू परफॉर्म. ठीक है. तो ये RS 55 इंडिकेटर भी बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली, एंड जिन लोगों को अपने प्रॉपर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना है फॉर एंट्री एंड एग्जिट्स एंड एवरीथिंग. So this was all about the price action scans. Now we have volume and delivery scans. So volume and delivery scans में भी हम लोग weekly scans में आते हैं for example. So इसमें क्या है कि हम लोग का 3 scans of category volume and delivery. First is daily, जिसके अंदर जितने भी डेटा है that is on a daily basis. Weekly के अंदर जो this week है, इसके अंदर ये जितना भी आपको डिलीवरी क्वांटिटी एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी दिख रहा है ये इस पूरे करंट वीक का है, इस वीक में जितने ट्रेडिंग डेज हुए हैं. एंड जो मंथली वाला है वो उस करंट मंथ का होता है, ऑल आर ऑन कैलेंडर मंथ बेसिस. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अडानी पोर्ट्स का एग्जांपल लूं तो मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन के अंदर इस स्टॉक में इस क्वांटिटी का डिलीवरी हुआ है दैट इज 2,78,40,000 एंड समथिंग. एंड इसका तो एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी था पिछले 5 वीक्स का दैट वाज 83 लैक्स ओनली. मतलब पिछले 5 वीक्स का जो एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी था इट वाज 83 लैक्स. एंड करेंट वीक के अंदर दैट इज मंडे एंड ट्यूसडे ओनली इन 2 डेज इस स्टॉक के अंदर 3.3x गुना ज्यादा डिलीवरी हुआ है, विच विच मीन्स कि कल की जो मार्केट में सेलिंग आई थी उसमें अडानी पोर्ट्स में काफी ज्यादा बाइंग आई है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पीपल हैव एक्चुअली बॉट दिस स्टॉक एट वेरी लो लेवल्स, जिससे हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है चूंकि प्राइसेस आर 13% डाउन. ठीक है. तो इसके थ्रू आप ये ट्रैक रख सकते हो कि हाउ आर market participants in the market tracking which kind of stocks and how are they tracking it and like what is the rationale behind it. अगर अडानी पोर्ट्स अगर इतने कमती दाम पे मिल रहे हैं so they this is one of the reasons कि they have started buying this अडानी पोर्ट्स. तो बेसिकली यू कैन ट्रैक द डिमांड एंड सप्लाई कि कौन से स्टॉक का डिमांड बहुत ज्यादा है अभी मार्केट में, कौन से स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग आ रही है या बाइंग प्रेशर है, ओनली सेलर्स है. देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स दैट कैन बी एनालाइज्ड फ्रॉम जस्ट वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स. ठीक है. अब आते हैं हम लोग टेक्निकल स्कैन्स पे. सो लेट मी टेल यू देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है. बट क्या होता है कि नॉट वन ट्रेडर कैन यूज एंड शुड यूज ऑल ऑफ द इंडिकेटर्स बिकॉज हर इंडिकेटर कहीं ना कहीं आपको सेम एग्जांपल ही देगा, सेम इंटरप्रिटेशन ही देगा, बिकॉज ऑल ऑफ द इंडिकेटर्स आर कैलकुलेटेड एंड बेस्ड ऑन द टेक्निकल प्राइसेस ओनली, राइट, ओनली ओनली ऑन द OHLC. बस सबके अंदर नंबर्स अलग अलग होते हैं. ठीक है. सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपको किसी एक इंडिकेटर के साथ स्टार्ट करना चाहिए, आप ऑलरेडी 2-3 इंडिकेटर फॉलो करो तो आप उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ एंड उसी के साथ फॉलो करो.
ऑल्सो इफ यू गाइज फील कि यहाँ पे वी हैव ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, अगर आप लोग को लगता है कि ऐसा कोई भी इंडिकेटर है जो मिसिंग है, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस ऑन आवर स्टॉकेट सपोर्ट और ऑन आवर सोशल प्लेटफॉर्म्स, एंड विल श्योरली लुक इनटू इट कि अगर हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर पाए. So let's start with SMA. For example, SMA is a simple moving average. अगर मैं SMA 20 का एग्जांपल लूं तो SMA 20 इज मेरे पास 20 डेज का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज. ठीक है. सो SMA इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर. SMA एंड EMA फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स इन द मार्केट, कि कौन से स्टॉक्स मेरे अभी कैसे हैं, मतलब कौन सा अपवर्ड ट्रेंड में है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है, एंड हाउ आर दे इन अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. सो मैं आप लोग को दो स्कैन बताता हूँ बेसिकली. 50 SMA क्रॉसिंग 100 SMA फ्रॉम बिलो एंड अबव, एंड 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो एंड अबव. बेसिकली दीज टू आर कंसिडर्ड गोल्डन क्रॉसओवर्स एंड डेथ क्रॉसओवर्स. जो स्कैन है जो 50 SMA क्रॉसिंग 100 SMA फ्रॉम बिलो है, दिस इज द गोल्डन क्रॉसओवर. 50 SMA क्रॉसिंग 100 SMA फ्रॉम अबव, दिस इज द डेथ क्रॉसओवर. So golden crossover इसलिए because it is a bullish crossover scan, and death crossover इसलिए because it is a bearish crossover scan. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हम लोग 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो को पकड़ते हैं. सो इस स्कैन के अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, दैट इज 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो. सो मैं आप लोग को इसका एग्जांपल दिखाता हूँ. ठीक है. हाउ दिस स्कैन वर्क्स, मैं इसी के थ्रू आपको बिलो एंड अबव दोनों का एग्जांपल दिखाता हूँ. सो अगर आप लोग 5 years का चार्ट देखोगे, सो दिस पिंक लाइन इज द SMA 50 लाइन, एंड दिस ग्रीन लाइन इज द SMA 200 लाइन. तो एट दिस लेवल यहाँ पे एक पहले डेथ क्रॉसओवर बना, दैट इज 50 SMA 200 SMA को ऊपर से क्रॉस कर रहा था, विच मीन्स अ बेयरिश साइन. तो उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट्स ऑलमोस्ट साइडवेज ही है एंड कंसोलिडेट ही कर रहा है. एंड देन फिर मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट आई, एंड एट दिस लेवल मार्केट के अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर बना इस स्टॉक में, ग्रीनवेल नॉर्टन में, विच मीन्स कि अब इस स्टॉक का जो मोमेंटम है दैट इज ऑन अपवर्ड राइज. उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम आया है. राइट. एंड एट दिस पॉइंट इस वापस से जाके यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर बना, तो यहाँ पे बेसिकली इट वाज एग्जिट पॉइंट. तो अगर आप देखोगे फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम द लेवल ऑफ 544 टू द लेवल ऑफ 1700, ऑलमोस्ट 3x, ऑलमोस्ट 3x. ठीक है. एंड देन फिर वापस से एक शॉर्ट डेथ क्रॉसओवर बना था, फिर यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर बना एट द लेवल ऑफ 2096, एंड देन फिर वो ऊपर तक गया, एंड फिर यहाँ पे अंदर एक सेलिंग बना विच वाज एट लॉस. फिर यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर बना. सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी छोटा SMA, एनी SMA और EMA विद अ स्मॉलर नंबर क्रॉसेस एनी बिगर SMA और EMA, then it is considered as a bullish crossover, and same way vice versa. So this way हम लोग SMA EMS को ट्रेड कर सकते हैं, एंड SMA EMS जितनी भी लॉन्गर ड्यूरेशन SMA EMS है दैट आर यूज फॉर मोर पोजिशनल काइंड ऑफ ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स. एंड जितनी भी छोटी SMA एंड EMA क्रॉसओवर है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके बेसिस पे आप इसके बेसिस पे आप काफी सारा स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो ऑन योर रेस्पेक्टिव टाइम होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन, कि आपको किस टाइम फ्रेम के लिए आपको स्टॉक्स चाहिए. देन अगेन वी हैव RSI, जो मैंने आपको बोला, विवेक सर का ये वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर्स है RSI, along with RS55. उनका एक कंबाइंड मॉडल है RSI एंड RS55 का. प्लीज गो एंड चेक ऑन हिज यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट. सो इसके अंदर भी जो स्टॉक्स की जो ट्रेंड होती है ना, कि स्टॉक्स कब है बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है, स्टॉक्स की जो मोमेंटम होती है, दिस इंडिकेटर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द मोमेंटम ऑफ दैट स्टॉक, whether that stock is an overbought zone or a oversold zone. So you can filter out everything of them. अभी हम लोग लास्ट रिलीज में हम लोग ने वीकली लेवल्स पे भी हम लोग ने काफी सारे टेक्निकल स्कैन्स लॉन्च किए हैं. दैट इज वीकली RSI, वीकली पैराबोलिक स्टार एंड वीकली सुपर ट्रेंड स्कैन्स. तो पैराबोलिक स्टार एंड सुपर ट्रेंड स्कैन्स आर टू कैच द ट्रेंड रिवर्सल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को सुपर ट्रेंड स्कैन का एग्जाम्पल दूं, सो कल खाली एक सिंगल डे के अंदर इतने सारे स्टॉक्स थे जिसके अंदर एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया बिकॉज ऑफ द सुपर ट्रेंड, विच इज ऑब्वियसली कल इतनी ज्यादा सेलिंग आई. बट अगर मैं 3rd जून को देखूं तो 3rd जून को बहुत कम थे, क्योंकि 3rd जून मार्केट्स काफी ज्यादा हाई था. एंड अगर मैं 3rd जून का इसमें एग्जाम्पल लूं, देन यू विल सी देयर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स. फॉर एग्जाम्पल IOC. तो चलो मैं आप लोग को सुपर ट्रेंड का एग्जाम्पल बताता हूँ ये कैसे काम करता है. सो सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर टू SMA, बट इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल देखा जाता है. सो एज यू कैन सी दिस ग्रीन एंड रेड लाइन. सो जब भी ग्रीन लाइन, व्हेन व्हेनेवर देयर इज अ ग्रीन लाइन, दैट मींस अ बाई सिग्नल
is currently active in that respective stock. And as soon as यहाँ पे, like you can see, green turns red and red goes above the price line. तो जैसी लाइन शिफ्ट होके रेड हो जाता है, दैट मीन्स अ सेल सिग्नल इज जनरेटेड. सो यू विल सी कि यहाँ पे 95 के लेवल से यहाँ पे नीचे में प्राइसेस डिक्लाइन हुई है. देन अगेन एट दिस लेवल वापस से एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ इस स्टॉक के अंदर, एंड देन इट वाज अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एंड मार्केट साइडवेज थी, एंड देन फिर एक सेल सिग्नल, एंड देन फिर अगेन यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ, विच कंटिन्यूड फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग टाइम, एंड इट return from 89.70 to, you can say, sell signal वापस जनरेट हुआ 173 पे. So that is almost 100% return, right? So super trend indicator is for catching trend reversals from bullish to bearish or bearish to bullish. Obviously आप अगर डेली सुपर ट्रेंड चेक करें तो दैट इज मोर फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम और स्मॉल पोजिशनल ट्रेड्स. बट अगर आप वीकली लेवल के आरएसआई, पैराबोलिक सारे सुपर ट्रेंड चेक करें तो दैट इज मोर फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन. So this was all for the technical indicator side. Then we have fundamental scans. So in fundamental scans also there are multiple parameters. प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स का है, कैश फ्लो है, सॉल्वेंसी है, वैल्यूएशन क्या है उस स्टॉक्स का, और डिविडेंड देता है कि नहीं देता, व्हाट आर द शेयर होल्डिंग पैटर्न. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, एंड वी हैव आल्सो डिवाइडेड देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. तो आप इफ यू गो इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन्स, यू विल फाइंड ऑल द relevant parameters for scanning on a fundamental basis. High ROE, improved return on equity, net profit. In the second last release recently, we have launched seven new fundamental scans which are very powerful. Highest annual net profit in last 10 years, highest quarterly net profit in last 10 years, or highest quarterly EBITDA in last 10 years, highest annual EBITDA in last 10 years. So basically, high EBITDA margin, high PAT margin, you will get to see all of the profitability scans over here. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कि कोई ऐसा स्टॉक जो आज से 10 साल के अंदर अंदर अभी उस स्टॉक ने अपना आज तक का हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया इन द लास्ट 10 years. फॉर एग्जांपल, आप मैं किसी ऐसा स्टॉक एग्जांपल देता हूँ जो 10 साल से है. आई गेस मोस्ट ऑफ द कंपनी. सो बेसिकली इफ यू सी और लॉयड्स मेटल एनर्जी, आप इसके अंदर देखोगे इस स्टॉक का जो लास्ट हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट था वो था 97 करोड़, 97.37 करोड़. दैट वाज इन 2022. फिर 2023 के अंदर एवरेज नंबर थे, शायद से इससे कम थे, इसलिए एक नया हाई नहीं बना. और 2024 के अंदर इस स्टॉक ने 1242 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो उस स्टॉक का आज तक का 10 साल का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, विच इज द क्लियर का 12.8x जंप. सो इट इज वेरी मतलब एविडेंट कि इस कंपनी के अंदर कुछ बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, या कुछ बहुत अच्छा बिजनेस चेंज हुआ है, या काफी ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, जिसके वजह से कंपनी वॉज एबल टू मेक सच अ हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 10 years. तो ऑब्वियसली यू कैन फिल्टर आउट स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल पैरामीटर्स एज वेल, कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हाईएस्ट फंडामेंटल ऑपरेटिंग लेवल्स पे काम कर रहे हैं. देन वी हैव टर्नओवर स्कैन्स. इन टर्नओवर इट इज ऑल अबाउट द सेल्स, कि कंपनी की सेल्स कैसी हो रही है. देन वी हैव सॉल्वेंसी स्कैन्स टू डिपिक्ट एंड टू अंडरस्टैंड विच आर दी स्टॉक्स that are the strongest in terms of debt, in terms of leverage, which are the stocks which are very prone to risk with respect to debt levels. देन वी हैव कैश फ्लो स्कैन्स, वैल्यूएशन स्कैन्स. अगर आप लोग को वैल्यूएशन चेक करने हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है विच आर ट्रेडिंग अबव इंडस्ट्री पी और बिलो ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग बिलो इंडस्ट्री पी, ट्रेडिंग विथ हाई पी, लो पी, यू कैन ट्रैक इट फ्रॉम ओवर हियर. Then we have dividend scans. For many investors who are new and they only invest in dividend paying stocks, then you can use the consistently paying dividend scans or consistent high dividend payout ratio to filter out stocks which pay the highest amount of dividend in terms of their EPS. Then we have shareholding scans. You can filter out these stocks and you can track the patterns, in which stocks promoters are increasing or decreasing their stake, in which stocks mutual funds are increasing or decreasing their stake, and accordingly, or foreign institution investors, FIs, are increasing or decreasing their stake. Then we have corporate activity, promoter holding pledge scans. So this was all about the fundamental scans. Then we have futures and options scans and strike price option scans. So basically futures and option scans के अंदर you can find out कौन से stocks के अंदर futures में open interest increase हुआ है या decrease हुआ है.
एंड लॉन्ग फ्यूचर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं. सेम गोज विद फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन स्कैन्स. देन वी हैव पीसीआर स्कैन्स. देन वी हैव स्ट्राइक वाइज ऑप्शन स्कैन्स फॉर बोथ इंडेक्स एंड स्टॉक्स, जिसके अंदर आपको कौन से स्टॉक के कौन से इंडेक्स पे सबसे हाईएस्ट ओ आई इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, सेम गोज विद इंडेक्स, ये आपको पता चल जाएगा. सो यू कैन ट्रैक इट ओवर हेयर एट एन यूडी लेवल. देन वी हैव कैंडलस्टिक स्कैन्स. कैंडलस्टिक स्कैन्स के अंदर भी लाइक दे आर प्राइस एक्शन, सो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होती है. अब इफ यू सी दी चार्ट, इफ यू सी दी टेक्निकल चार्ट ऑफ एनी स्टॉक, तो एक सिंगल कैंडल जो होता है ना, दैट कैंडल ऑल्सो itself depicts a story about that stock, and you can analyze demand and supply levels or demand and supply trend of that stock or on that day from just a single candle. आपको कैंडल स्टडी करके भी समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इनटू द बुलिश स्कैन्स एंड यहाँ पे आपको वाइट मारूबुजू इफ यू चेक, ऑब्वियसली कल का मैं तो नहीं मिलता बट थर्ड को मिल जाएगा, राइट? सो सी, सो दिस इज द पैटर्न. हाउ डज इट लुक लाइक? फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, इस स्टॉक के अंदर व्हाइट मारूबोजू बना था ऑन मंडे ऑन थर्ड इटसेल्फ, राइट? व्हाइट मारूबोजू मींस कि देयर वाज नो सेलिंग फ्रॉम द टॉप लेवल्स. सो उसके बाद कल जब मार्केट्स करेक्ट हुई तो ऑब्वियसली इसके अंदर सेलिंग आया, बट जस्ट बिकॉज दिस स्टॉक वाज सो स्ट्रॉन्ग, उस स्टॉक के अंदर वापस से आज अच्छी खासी बाइंग आ गई वापस एंड स्टॉक रिकवर्ड, right? So white marubozu or other candlestick patterns are very important in terms of identifying trends as well. इसके अंदर भी कौन से bullish continuation है, reversal है, you can identify such trends with the help of only candlestick patterns. So this was all about the scan module. So let's understand and let's have some Q&A sessions before. एंटनी राजा जी, जो मीटिंग है आई वी रिग्रेट बट इट इज नॉट अवेलेबल इन तमिल. वी रिग्रेट फॉर द कन्वीनियंस, इट इज ओनली अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश. राकेश हरिचंदन जी, आई एम यश फ्रॉम द स्टॉकेज टीम, स्टॉकेज डेटा टीम. ख्याति जी, डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग एंड अबव इज कि कोई स्टॉक है जो अपने 20 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है? बट क्रॉसिंग इज कि वो स्टॉक है जो अपने 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था एंड उसकी प्राइसेस ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया. फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टॉक का प्राइस इज 100 रुपीज एंड उसका 20 EMA इज 105. तो अगर वो स्टॉक अपवर्ड मूव करता है ग्रेजुअली, अ टाइम विल कम व्हेन उसका जो प्राइसेस होगा वो उसके 20 SMA को क्रॉस करेगा, मे बी 106 और 107, एंड एट दैट टाइम इट विल बी अ क्रॉस ओवर. बट अगर कोई स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली अपने 20 EMA के ऊपर ही मूव कर रहा है, दैट इज उसका जो 20 EMA है या SMA है वो अपने प्राइसेस के नीचे ही है, दैट मीन्स कि वो उसके अबव ट्रेड कर रहा है, प्राइसेस आर ट्रेडिंग अबव द रेस्पेक्टिव SMA और EMA. ठीक है मुकेश जी, डिफरेंस बिटवीन क्लोज क्रॉसिंग लास्ट मंथ हाई एंड क्लोज अबव लास्ट मंथ हाई, ठीक है? तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का लास्ट मंथ का हाई था 100 रुपीज, ठीक है? एंड वो स्टॉक अब 100 रुपीज से मे बी लास्ट मंथ 90 रुपीज पे क्लोज हुआ फॉर एग्जाम्पल. इस करंट मंथ के अंदर उस स्टॉक, अभी जो स्टॉक ने अपना 90 से ऊपर क्रॉस करके 100 को क्रॉस करके, ठीक है, 100 के लेवल को क्रॉस करके 102 पे क्लोजिंग दिया, तो वो आएगा फिल्टर क्लोज क्रॉसिंग लास्ट मंथ हाई में. मतलब जिस दिन ये क्रॉसओवर हुआ ना, क्रॉसओवर इज अ इवेंट, कि क्रॉसओवर तो डेली नहीं होता, राइट? अगर 195 से 102 चला गया, सो इट इज अ इवेंट, क्रॉस ओवर हुआ उस दिन. तो वो स्टॉक खाली उसी दिन आएगा. बट अब अगर वही स्टॉक लास्ट मंथ के हाई लेवल्स पे, दैट वाज 100 के ऊपर ही ट्रेड करने लगा उस दिन, देन वो क्लोज अबव लास्ट मंथ हाई में आएगा. वो चाहे 104 पे ट्रेड कर रहा है, 105 पे ट्रेड कर रहा है, वो वापस 101 पे ट्रेड कर रहा है, जब तक वो अपने लास्ट मंथ के हाई दैट वाज 100 उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक वो क्लोज अबव लास्ट मंथ हाई पे आएगा. अनुज जी, रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस, फॉर द it was a mistake and it I will make sure that it doesn't happen again.
रुपए जी, सेक्टर रोटेशन का अलग से स्मार्ट सेशन होता है. यू कैन ग्रेजुअली यू कैन come in that session and join and understand sector rotation. Overbought zone is above 75. Rashmi ji, overbought zone is above 75. RSI levels of more than 85 is overbought zone. प्रसाद की जी, अभी हम लोग माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स समझेंगे. इन कस्टम स्कैन्स वी कैन ओनली ऐड 10 इंडिविजुअल स्कैन्स एंड वी डू नॉट प्रोवाइड ऑप्शन टू ऐड मोर देन दैट. एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हेन वी अंडरस्टैंड कस्टम स्कैन्स, कॉम्बिनेशन स्कैन्स. Yes, you can make a combination scan of three EMA crossovers. अरुण जी, अभी हम लोग विवेक सर का कॉम्बिनेशन स्कैन के साथ ही हम लोग समझेंगे कि हम लोग कॉम्बिनेशन स्कैन कैसे बनाए. Sujin ji, currently we do not have 3 and 8 EMA crossover scans available. I have noted on your request and will surely look into it. अरुण जी, हाई क्वांटिटी डिलीवरी वर्सेस परसेंटेज डिलीवरी. सो परसेंटेज डिलीवरी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आज किसी स्टॉक के अंदर 100 का वॉल्यूम हुआ एंड उसके अंदर 80 स्टॉक्स डिलीवरी हुए. 80 स्टॉक्स वेयर कंसिडर्ड फॉर डिलीवरी. सो डिलीवरी परसेंटेज इज 80 परसेंटेज. ठीक है. लेकिन वही कल किसी स्टॉक के अंदर उसी सेम स्टॉक में 1000 का डिलीवरी हुआ, 1000 का वॉल्यूम हुआ. सो कल का जो वॉल्यूम था दैट वाज ग्रेटर देन, या कल का जो व्हाट वाज सीइंग, कल का वॉल्यूम था 1000 एंड कल उस स्टॉक के अंदर डिलीवरी सिर्फ 200 की हुई. देन इन दैट केस कल का जो डिलीवरी परसेंटेज होगा दैट विल ओनली बी 20%. तो आज जितना वॉल्यूम था उसके अंदर डिलीवरी परसेंटेज वाज 80%. कल वाले में दो द डिलीवरी अमाउंट, द डिलीवरी नंबर ऑफ शेयर्स वाज ग्रेटर, बट स्टिल डिलीवरी परसेंटेज वाज लेस. एचईसी आईफोन जी, अगर आपको एफएनओ स्कैन्स को अलग से समझना है देन प्लीज डू रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम एंड वी कैन schedule a call and accordingly I will explain you the FNO scans. प्रवीण चंद्र शाह जी, प्लीज नोट दैट ये जो लाइन के कलर्स है 10, 20 एंड 50 के, ये ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर द लाइट एंड डार्क मोड, सो वी कैनॉट हेल्प ऑन दैट. बट स्टिल आई विल टेक योर रिक्वेस्ट सो दैट वी कैन मेक सम चेंजेस टू मेक इट मोर विजिबल. Arun ji, please, you can, as we are short on time, you can raise out a request to the StockEdge support, and then we'll look into it, and I will surely look into your query and explain you the same. So let's proceed further to the my combination scans. So this is the Vivek sir's combination scans, right? Financial improvement with price action and all the other combination scans available over here. So अभी हम लोग यही combination scan बनाएंगे. So उसके पहले मैं आप लोगों को सबको शेयर कर देता हूँ. I have shared the Vivek sir's combination scan PDF. Everyone please download that PDF. And अभी हम लोग इसी वक्त अभी हम लोग माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स बनाएंगे. So for that you will have to go to the my stockage section and then you will have to go to the my combination scans. In that case, जैसे मैं यहाँ पे पहले कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं उन सबको डिलीट कर देता हूँ. So अभी हम लोग फीफा का कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे. तो आपको नाम देना है, आपका ये कॉम्बिनेशन स्कैन क्रिएट हो जाएगा. प्लीज नोट दैट आप मैक्सिमम 20 कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो, राइट. 20 डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो. एंड हर एक कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर यू कैन ऐड मैक्सिमम ऑफ 10 इंडिविजुअल स्कैन्स. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से स्कैन्स है. फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन, फीपा स्कैन इन दिस कॉम्बिनेशन स्कैन. सो इन दैट केस सबसे पहले स्कैन है क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन. सो यू कैन डू टू ऑप्शन. इधर यू कैन सर्च, अगर आपको नहीं पता वो स्कैन कहाँ पे,
और एल्स यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड यू कैन फाइंड आउट कि वो स्कैन कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, आपको स्टार मार्क पे ऐड करना है, दिस स्कैन विल गेट एडेड एंड देन यू हैव टू ऐड अदर स्कैन, improve return on equity and improve return on capital employed. So you can search over here, improve return on equity, improve return on capital employed, then quarterly net profit growth year on year and EBITDA. Quarterly net profit growth year on year, quarterly EBITDA growth year on year, high increase in quarterly year sales. ठीक है, so ये भी ऐड हो गया. So we have added sales scan and the last is consistent cash from operations. Consistent cash from operations. So we have added all the 7 scans. So before proceeding to the output, let's first understand how to make a combination scan and what is the what should be the rationale behind making a combination scan. तो मैं आप लोगों को पहले फीपा का मतलब समझाता हूँ कि why these 7 scans were added to make a combination scan on फीपा. ठीक है, तो लेट्स ब्रेक डाउन इट्स कंपोनेंट्स. फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन. सो अगर मेरे को प्राइस एक्शन डिनोट करना है, विच मीन्स कि कोई ऐसा स्टॉक जो विच इज टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, जिसका प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है. सो उसके लिए टू फिल्टर आउट दो स्टॉक्स, ओनली वन स्कैन इज एनफ, दैट इज क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन. बिकॉज वी आर टेकिंग नंबर्स ऑफ रिजल्ट्स, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स के जो नंबर्स होते हैं वो मैक्स टू मैक्स एक साल तक के अंदर रेंज करते हैं. सो इसीलिए हम लोग क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन लेंगे. Why this? Because if any stock which is trading within its 52 वीक हाई जोन, जो मैंने आप लोग को बोला 15% रेंज में ट्रेड कर रही है अपने 52 वीक हाई लेवल्स के अंदर, सो इट इज क्लियरली एविडेंट दैट दैट स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन लेवल्स. विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन लेवल्स दैट स्टॉक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इसीलिए सिर्फ एक स्टॉक के एक स्कैन के थ्रू वी कैन फिल्टर आउट दी प्राइस एक्शन पार्ट. नाउ कम्स दी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट. तो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के अंदर देयर आर मल्टीपल सब पैरामीटर्स. फर्स्ट इज इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी एंड इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. दैट इज की सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना है कि अगर कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो इंप्रूव हो रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी के अपने शेयर होल्डर्स को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दे रही है उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट है, that is ROE for you. Then whether the company is generating enough return on its capital invested. मतलब कंपनी जो भी रुपया या कैपिटल अपने बिजनेस में लगा रही है, क्या वो उससे जो रिटर्न जनरेट कर रही है उसको ग्रो करा पा रही है, दैट इज ROCE फॉर यू. सो अगर इन दोनों में इंप्रूवमेंट है, विच मीन्स की कंपनी का फाइनेंशियल इंप्रूव हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. नाउ लेट्स बॉइल डाउन टू द एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, दैट इज द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी. सो उसके अंदर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टॉप लाइन नंबर्स, बॉटम लाइन नंबर्स, दीज टर्म्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड ऑल. तो इसीलिए हम लोग ने ये 3 नंबर्स ऐड किए, दैट इज क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, विच इज दी bottom line number, net profit. Then quarterly EBITDA growth year on year, which is the operating profit numbers. Then high increasing quarterly sales year on year, which is the top line numbers. तो हम लोग ने ये तीनों स्कैन्स को ऐड किया, रीजन बिंग कि इस 3 स्कैन से अगर कोई भी स्टॉक इन तीनों स्कैन में क्वालिफाई होता है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि उस स्टॉक का टॉप लाइन नंबर्स भी ग्रो कर रहा है, बॉटम लाइन नंबर्स भी ग्रो कर रहा है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर्स भी ग्रो कर रहा है. ठीक है. कई बार यू विल फाइंड आउट कि किसी भी स्टॉक का सेल्स ग्रो हुआ बट एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ, मींस कि उस कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है या रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो ऑलरेडी बहुत हाई है. ठीक है. किसी कंपनी का हो सकता है नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ बट सेल्स और एबिटा ग्रोथ नहीं हुआ, विच मीन्स कि या तो कंपनी फॉल्स रिपोर्टिंग कर रही है या कंपनी को कोई एक्सेप्शनल आइटम का गेन हुआ है. कभी कभी होता है कि कंपनी का एबिटा ग्रो नहीं हुआ, सेल्स ग्रो हुआ, विच मीन्स कि कंपनी का जो रॉ ऑफ कंजम्पशन, जो कंजम्पशन एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से एबिटा ग्रो नहीं हो पा रहा है. सो इसीलिए देयर कैन बी रेड फ्लैग्स अगर ऐसी कंपनीज आती है. इसीलिए टू फिल्टर आउट ऑल दी रेड फ्लैग्स वी हैव यूज्ड ऑल दी 3 स्कैन्स, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड हाई इंक्रीजिंग क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर. जो भी स्टॉक इन तीनों स्कैन को क्वालिफाई करेगी, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द करंट क्वार्टर लेवल. ठीक है. अब the last is consistent cash from operations. So why this? Because obviously किसी भी कंपनी को अपना कंपनी रन करने के लिए they need cash from operations, working capital cash or cash to invest more in the further projects, upcoming capital, upcoming investment projects. तो अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली कैश जनरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज, तो उस केस में क्या होगा, दे विल ऑलवेज हैव कैश टू ग्रैब ऑन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर देम. इसीलिए विच कैन ट्रिगर देयर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट and to also maintain the current capital operations, current working operations.
तो इसीलिए वी हैव यूज दिस 7 scans, या विवेक सर हैव यूज दिस 7 scans टू मेक अ कॉम्बिनेशन स्कैन ऑफ फीपा. ठीक है. नाउ लेट्स कम डाउन टू द स्टॉक्स. So before proceeding further to the output, let me again explain the module. यहाँ पे आपको मेजर स्टॉक्स का फिल्टर लगाया हुआ है, विच इज अगेन द कंबाइंड लिस्ट ऑफ एनएसई एंड बीएसई 500 स्टॉक्स. देन वी हैव द डाउनलोड ऑप्शन. आप इस कॉम्बिनेशन स्कैन को डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन डू योर फर्दर एनालिसिस इन योर एक्सेल और सीएसवी फॉर्मेट. वी ऑल्सो हैव द एडवांस फिल्टर्स जो हम लोग के स्कैन मॉड्यूल में था, जिसके थ्रू आप फर्दर इसके अंदर फिल्टर्स लगा के आप कोई भी कॉम्बिनेशन स्कैन को और फर्दर फिल्टर कर सकते हो एंड स्टॉक्स का जो काउंट है उसको रिड्यूस कर सकते हो. देन यहाँ पे आती है सबसे बेस्ट पार्ट, दैट इज बैक टेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉम्बिनेशन स्कैन बनाए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेक अ कॉम्बिनेशन स्कैन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, एंड यू हैव एडेड 7 to 8 scans for over there, and you want to trade intraday in the upcoming market session. So what you can do is कि आपने फॉर एग्जाम्पल 7 to 8 स्कैन्स बनाए, का कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, एंड देन इफ यू वांट टू बैक टेस्ट कि आउटपुट की आपका जो कॉम्बिनेशन स्कैन है वो सही बना है कि नहीं बना है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू द प्रीवियस डेट्स एंड यू कैन चेक कि उस दिन जो आउटपुट आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल एबीबी इंडिया 27 को फिल्टर हुआ. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ इंट्राडे कॉम्बिनेशन स्कैन, तो अगर 27 में को एबीबी इंडिया फिल्टर हुआ, देन 28 मई को एबीबी इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है ऑन इंट्राडे लेवल, इज इट प्रोवाइडिंग यू गुड लेवल्स टू डू अ इंट्राडे ट्रेड और नॉट. तो उसी के बेसिस पे आप अपने जो स्कैन्स है उसको ट्वीक कर सकते हो. आपको अगर कोई स्कैन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको चेंज करके क्रॉस करके नए स्कैन ऐड कर सकते हो, या इसी में और 2-3 स्कैन ऐड कर सकते हो. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कैन्स मॉड्यूल. अब मैं आप लोग को आउटपुट पे आता हूँ. आपको ये आउटपुट दिख रहा होगा, यहाँ पे परफेक्ट मैच का कॉन्सेप्ट है. तो परफेक्ट मैच मींस कि जो स्टॉक हम लोग ने जितने भी स्कैन्स ऐड किए, इन दिस केस इट इज 7. सो इफ एनी स्टॉक दैट क्वालिफाइज फॉर ऑल दी 7 scans will will be considered as a perfect match. That means कि that stock is qualifying for all 7 scans. But when you will scroll down and अगर आप देखोगे नीचे में you will get to see almost there section as well. So what is this almost there? Almost there means कि कोई स्टॉक कई बार होता है कि वो लोग एक दो स्कैन नहीं फिल्टर कर पाते, बट दो स्टॉक्स आर एक्चुअली वेरी गुड. सो टू नॉट मिस आउट ऑन दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स, वी हैव क्रिएटेड दिस ऑलमोस्ट देयर कॉन्सेप्ट, इन विच इफ एनी स्टॉक क्वालिफाइज मोर देन 75% ऑफ द इंडिविजुअल स्कैन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 कॉम्बिनेशन स्कैन ऐड करके रखा है, ठीक है, 10 इंडिविजुअल स्कैन ऐड करके रखें, सो 10 स्कैन का 75%, मोर देन 75% विल बी 8 scans. तो अगर कोई भी स्टॉक 10 में से 8 स्कैन्स को क्वालिफाई करेगा तब वो ऑलमोस्ट देयर में आ जाएगा, एंड अगर 10 के 10 को क्वालिफाई करेगा तो वो परफेक्ट मैच में आ जाएगा. राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू मेक अ कॉम्बिनेशन स्कैन, वाई टू मेक अ कॉम्बिनेशन स्कैन. एंड प्लीज नोट कि यहाँ पे 450 प्लस स्कैन्स है. राइट. हर स्कैन का एक अपना कोरिलेशन होता है विद द अदर स्कैन्स. फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये चेक करोगे कि आपने एक फंडामेंटल स्कैन बनाया कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है बट स्केल्स नीचे गिर रहा है, सो ये मैच नहीं करेगी. मतलब ये इसमें आपको स्टॉक्स बहुत कम दिखेगी एंड हो सकता है रेड फ्लैग्स दिया है. तो इसीलिए आप जो भी स्कैन्स ऐड करोगे ना, यू प्लीज मेक श्योर दैट दो स्कैन्स आर इंटर रिलेटेबल. मतलब ऐसा नहीं हो कि आप आरएसआई में ओवरबॉट जोन का आपने फिल्टर लगा लिया एंड सीसीआई में आपने ओवरसोल्ड जोन का स्कैन लगा लिया, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको एक भी स्टॉक नहीं आएगा. राइट. इट इज मतलब इट इज वेरी रेयर. तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी स्कैन्स लगा रहे हो वो आप तो बुलिश का ही लगा रहे हो या तो बेरिश का ही लगा रहे हो. अगर आप लोग टेक्नो फंडा भी यूज कर रहे हो तो आप अगर 1 साल का टेक्निकल ले रहे हो तो उसी अकॉर्डिंग 1 साल का फंडामेंटल्स ले रहे हो, देन उसके अकॉर्डिंगली आपका जो आउटपुट आएगी दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन स्कैन्स. सो एक बार हम लोग समझते हैं क्या क्वेश्चन आंसर्स है. आई हैव शेयर्ड द वेक्सर्स कॉम्बिनेशन स्कैन्स पीडीएफ, प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम द चैट. अरुण जी, देयर कैन बी मल्टीपल कॉम्बिनेशन स्कैन स्विंग ट्रेडिंग के लिए. आप टेक्नो फंडा एक स्कैन कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हो, या यू कैन यूज द प्राइस एक्शन, द प्राइस एंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स, और यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल स्कैन्स एज वेल. SN Chandra ji and everyone, you can just click on the this blue button over here and that file will get downloaded. Ashish Bhavsar ji, you can you just need to click over the My StockEdge
And in my stockage, in the my data section, you need to click on my combination scans, and then you need to add a combination scan over here, and then like I showed, you can add the respective scans over there. राहुल जी, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैन नहीं है. व्हाट आई मेंट इज कि अगर आप लोग कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बनाते हो फॉर इंट्राडे पर्पस, कि आप लोग को ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो नेक्स्ट डे मार्केट में इंट्राडे में काम करेंगे, एंड उसके लिए इफ यू मेक अ कॉम्बिनेशन स्कैन, देन यू कैन मेक इट इन दैट वे. Hiren Patel ji, currently we only have scans for RS for individual benchmark and sector. We do not have a combined scan, but you can filter out stocks and combining the two RS scans of benchmark and sector. Okay, I'm sharing the PDF again. Please download this. I've shared the PDF. You can please download the PDF again. This is the PDF. Nagaraju, please join the sector rotation smart session, which is scheduled. I guess you will get to know the schedule of all the smart sessions in your mail, or you can contact the StockEdge support team, and they will guide you for that when you can join this sector smart session or sector rotation. I have already sent the PDF. Can anyone please confirm me? I have sent the PDF again. Can anyone please confirm me whether they have received it or not? Please check in the chat box. Yes, you can modify FIPA for swing trading and everything. Thank you so much. So let's proceed to the last section, that is trending stocks. So basically आप लोग ने अब स्कैन समझ लिया, आप लोग ने माई कॉम्बिनेशन स्कैन समझ लिया. Now comes the trending stocks. So what is trending stocks? So basically this is the trending stock section, which is the most used section on an intraday basis. And for everyone out there who wants to track the markets on an intraday basis, this is the best section or go-to section for all of you, right? So what do you get here? सो मार्केट में मार्केट्स 9 o'clock पे स्टार्ट होती है, एंड 9 to 9:07 इज द प्री मार्केट टाइम. 9:07 पे प्री मार्केट प्राइसेस फिक्स हो जाती है, एंड फ्रॉम 9:08 AM, आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम 9:08 AM दिस सेक्शन स्टार्ट गेटिंग अपडेटेड. 9:08 AM पे जो प्री मार्केट प्राइसेस है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी, राइट? एंड फ्रॉम 9:15 AM, फ्रॉम द वेरी टाइम द मार्केट स्टार्ट, this section will start getting updated every minute. I'm telling you, every minute. You just need to refresh the section and it will get updated as per the respective filter. अब आप फिल्टर लगा सकते हो मेजर स्टॉक्स का, या अगर आपको बाकी फिल्टर्स लगाने हैं, सी FNO स्टॉक्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स, ओनली PSU स्टॉक्स, आप फिल्टर लगा सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली दैट फिल्टर विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल टैब्स. सो बेसिकली यहाँ पे आप 9:15 पे आ रहे हो, एंड आपको यहाँ पे गेनर्स एंड लूजर्स का पूरा लिस्ट मिल जा रहा है एज पर द रेस्पेक्टिव फिल्टर, एंड वो कितना मूवमेंट हो चुका है, क्या प्राइस मूवमेंट है, क्या चेंज परसेंटेज, आपको सब यहीं पे गेनर्स एंड लूजर्स के अंदर मिल जाएगा. सो यू कैन वेरी वेल ट्रैक what is actually happening in the market and which are the stocks in action on the gainer side as well and on the loser side as well. Then uh, and you can also download this data whenever you want. Then comes the volume shockers, which is very important for all intraday traders out there, or for everyone who wants to make swing positions or anything as such. So how do you use this section? So for example, VMart retail. As you can see, average volume. So by average, I mean previous 5 days का average. Even if you check in the volume and delivery scans, वहाँ पे भी जो average word use किया हुआ है, that average is 5 periods, either 5 days, 5 weeks और 5 months. ठीक है? So VMart retail का जो 5 days का average volume है, that is 23,545. So as soon as इस स्टॉक का VMart retail का जो average volume है वो 235,455 क्रॉस किया होगा,
that is 23546. At that very moment, this stock would have popped out in this section over here. So obviously 23546, 547, 23600 ऐसे करके उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा. So obviously जब ये स्टॉक ने जो 9.8% का मूव दिया है, ये कोई 915 से तो दिया नहीं है, राइट. ये स्टॉक ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ होगा एंड ग्रेजुअली वॉल्यूम्स बढ़े होंगे, तभी स्टॉक के अंदर 11.5x का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, राइट. सो एज सून एज इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंड अगर आपको दिख रहा है 915 920 पे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड दैट टू ऑन अ रैपिड बेसिस, प्लस प्राइसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग. दो दो चीज होती है जब प्राइस इंक्रीज हो रही है साथ ही साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मतलब उस स्टॉक में बाइंग प्रेशर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है. अगर किसी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है एंड प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, इट मींस कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है. ठीक है. तो इसीलिए अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये स्टॉक पॉजिटिव है एंड इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देन ऑब्वियसली यू कैन पिक अप दैट स्टॉक एंड you can place an intraday trade in that, and you can do intraday trading and obviously earn depending on the charts. You can earn a hefty 2 to 3%. अब जैसे 9.8% है इसके अंदर, अगर आपने इसके एकदम इनिशियल लेवल्स पर अगर इसको पकड़ा होता है एंड इफ यू वुड हैव फाइंड दिस स्टॉक technical chart strong enough, then you could have easily made an intraday trade in this stock. Also if you find कि हाँ इस स्टॉक के अंदर जो आपको ट्रेडिंग मिल रही है वो काफी अच्छी मिल रही है एंड दैट दिस स्टॉक इज फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न इन दी charts, then you can also take a swing trade or a short term swing trade in this stock. So ऐसे करके you can filter out stocks from volume shockers over here. Now let's come to 52-week high low and all time high low. I will explain the two sections together. ठीक है. सो जो अभी मैं आप लोगों को 52-week हाई लो और ब्रेकआउट का स्कैन्स का जो आप लोगों को बात कर रहा था, ऑल टाइम हाई लो ब्रेकआउट स्कैन्स का जो बात कर रहा था, वो आपको इंट्राडे में ही पता चल जा रहा है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने अभी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है या जिन्होंने अभी 52-week हाई ब्रेकआउट दिया है एंड दे हैव जस्ट मेड अ न्यू 52-week हाई और अ न्यू ऑल टाइम हाई और लो. ठीक है. तो यहाँ पे भी फिल्टर्स अवेलेबल है, जैसे मैंने आप लोग को बोला मेजर स्टॉक्स या ऑल टाइम हाई लो. फॉर एग्जांपल इमामी. इमामी ने आज इंट्राडे के अंदर 745 का एक ऑल टाइम हाई बनाया. ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड आज के पहले इमामी का हाई क्या था. सो अगर मैं इसका टेक्निकल्स में आऊं, लेवल्स, इसका ऑल टाइम हाई आज का अपडेट हो चुका है, नेवर माइंड. सो मैं मंथली 10 ईयर में आता हूँ. इसका जो ऑल टाइम हाई है दैट इज 682.50. इसका जो ऑल टाइम हाई है दैट इज 682.50. ठीक है. अब इस स्टॉक ने 745 का ऑल टाइम हाई मारा है आज. सो ऑब्वियसली इस स्टॉक का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था दैट वो 682.50. अब इस 682.50 को जब इस स्टॉक ने क्रॉस किया होगा, दैट इज 683, 684 और 685. ठीक है. तो तब एट दैट वेरी मोमेंट ये स्टॉक इसी टाइम पे उस टाइम पे इस सेक्शन में आज अपडेट हो चुका होगा कि इमामी हैज मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 685 और 690 और 695 व्हाटसएवर इट इज. So if at that very moment if you can catch कि हाँ ये स्टॉक ने अभी एक जस्ट एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है एंड इफ यू वांट टू मेक अ इंट्राडे ट्रेड एंड इफ यू फाइंड कि नहीं इस स्टॉक का जो मूवमेंट है ये काफी बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है, सो दिस स्टॉक विल गो मोर हायर एंड द मोमेंटम and the further side momentum is still pending a lot, then you can make a swing trade or anything like that. So the best part is कि आप इंट्राडे के अंदर ही आप 52-week हाई लो ब्रेकआउट्स एंड ऑल टाइम हाई लो ब्रेकआउट्स आप कैच कर सकते हो फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली. एंड यहाँ पे यू कैन सी मल्टीपल स्टॉक्स, तो यू कैन फाइंड आउट कि कौन से स्टॉक्स में अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है कि काफी टाइम बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है. सो अकॉर्डिंगली खाली ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बेसिस पे, लाइक मेनी पीपल वेर आस्किंग हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग और हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, देन यू कैन फाइंड आउट स्टॉक्स फ्रॉम ओवर हियर फ्रॉम ट्रेंडिंग स्टॉक्स एज वेल. Obviously you need to do your due diligence and you need to be very careful with your risk reward and your trading strategy, but you will find very good opportunities in a momentum market and you will find good stocks that are making new highs or new volume shockers or whatever it is. And then it is most visited section. यहाँ पे बहुत सारे stocks हैं जिनको सबसे ज्यादा visit किया गया है during the intraday, right? So this was all about the trending stocks. अब जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आप लोग को बताऊंगा हाउ वी कैन यूज स्टॉक एज स्कैन्स, माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स इन सिंक एंड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो विद द प्रायर एक्सपीरियंस एंड with the feedback received from our users and their experience, what we have concluded is that
what we have concluded is that he we have developed a pattern that how we can get benefited by using these three. Okay, and this is especially for retail people who are not full-time traders or investors, and they do not have the full time to give it to the markets. So what you can do is कि आप लोग यूडी पे आओ, right? As soon as you receive the message, receive the push notification message that the stockage EOD has been done, so you need to come to the stockage application. You need to visit your favorite scans, individual scans. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने चार पांच scans आइडेंटिफाई करके रखे हैं, इन चार पांच scans को आपको डेली लेवल पे ट्रैक करना है, क्या आउटपुट आ रहा है क्या नहीं है, राइट? So आप you come to those scans and you find out good stocks from over there, and you make a list of 3 to 4 stocks and you find good stocks from where you do the analysis. Can you are finding these 3 4 stocks very good from over there. Then what you can do is then you will go to the my combination scans over there. You will track stocks and you will filter out stocks from your combination scans as well. तो वहां से भी you will filter out 3 to 4 stocks कि हाँ इस ये तीन चार स्टॉक आपको आपकी कॉम्बिनेशन स्कैन में अच्छे लग रहे हैं फॉर नेक्स्ट डे और फॉर स्विंग ट्रेडिंग और फॉर दी अपकमिंग ट्रेड्स दैट यू वांट टू टेक. ठीक है. सो क्या हो गया आपका जो सारा जो मार्केट एनालिसिस था वो आपका प्रीवियस डे ही हो गया, दैट उसी रात को ही हो गया. And then when you come back on the next day, on the trading day, so you just need to come to the trending stock section at 9 8 a.m. itself. ठीक है, आप 9 8 a.m. पे आके आप सारे के सारे प्री मार्केट प्राइसेस पे चेक कर लो कि आपने जो 7 to 8 स्टॉक्स का लिस्ट बनाया था, क्या उस 7 to 8 स्टॉक्स के अंदर कोई भी ऐसा स्टॉक है जो ऑलरेडी मूवमेंट दे रहा है, गेनर साइड पे है या लूजर साइड पे एज पर योर स्ट्रैटेजी. एंड इफ यू फाइंड एनी ऑफ योर स्टॉक प्रेजेंट ओवर देयर, और इफ यू कैन सर्च दैट स्टॉक कि हाँ वो स्टॉक आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है, देन क्या होगा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. ड्यूरिंग द इंट्रा डे, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, आपका जो टाइमिंग है फॉर एनालिसिस वो रिड्यूस हो जाएगा. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ट्रेडर, फॉर एनी इन्वेस्टर to track and analyze all 5,000 stocks during intraday market hours, during market hours, right? It is not possible. So it is better to do your homework, to do your due diligence before the market itself. So either you do it the previous night or you do it in the morning before market starts. So if you follow this pattern up, it will help you in three ways. First, help you will be very confident because you have already filtered out a list of 7 to 8 stocks which you want to only track, and only you will take trades or you will invest only in those 7 to 8 stocks on that particular day. Second, your timing will be reduced. You will be more concentrated towards making better trades and better positions rather than doing your analysis because all your levels will already be predefined कि आपको किन लेवल्स पे बाई करना है, किन लेवल्स पे सेल करना है, ऑलरेडी आपका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड रहेगा. थर्ड, you won't have to go on the opportunities and sell. एंड क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने ज्यादा खोए हुए रहते हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो उससे हम लोग अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते. सो द मोर योर माइंड इज क्लियर, द मोर यू विल बी एबल टू बेटर फाइंड अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग दी मार्केट आज इटसेल्फ कि कौन से ऐसे स्टॉक से जो नया ब्रेकआउट करे, 52 वीक ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, या किसी स्टॉक के अंदर आरएसआई का ब्रेकआउट आ रहा है या किसी स्टॉक के अंदर आरएस का ब्रेकआउट आ रहा है, सो यू कैन फिल्टर आउट दो स्टॉक्स accordingly. हिरेन जी, मैं अभी है ना सपोर्ट कॉल का मैं नंबर मैसेज कर दूंगा, यू यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट ओवर देयर. और विक्रम जी प्लीज स्क्रॉल द चैट अबव एंड यू विल गेट टू सी द पीडीएफ फाइल. और सादिक जी, I was giving example of techno funda scan. Basically a techno funda combination scan is wherein you combine 2 to 3 technical indicator scan and you combine some of the fundamental scans to make a technical fundamental scan which will filter out stocks that are strong on fundamental level as well and as well technical level as well. Thank you Anuj ji for the support. Vivek ji, you can use any of the applications for trading on your platform, but currently in StockEdge we have types, we have broker integration with Zerodha, Upstocks and Angel One only. Nagaraj ji, the trending stocks icon is on the explore section on the home page of the StockEdge.
Kankana ji, currently we do not have any scans for filtering out stocks for pivot point crossovers. I have taken your request and will surely look into it. Dr. Ved ji, how to trade directly from this? For example, अगर आपको if you feel you want to trade in Aditya Birla Fashion and Retail, you can click over here and you can click on the buy button. If your broker is already integrated and if you are already logged in, then you can just click. Then it will show the price and the respective section over here, and from that section only you can place your trade. Dr. Vivek, I've already told you how you can get breakout stocks. Either you can find out the stocks from the EOD scans, or you can find the breakout stocks on during intraday itself from the trending stock section. Dr. Vivek ji, like I explained in the scans module, we do have futures and option scans and strike price option scans. You can surely have a look on it. Yes, recording is available. You can contact the support team for the recording, or if you are a StockEdge social user, then you can go and search on the StockEdge social, or also you can search on the StockEdge YouTube channel. Over there, you will find the recording. Thank you, Shivaji. I am sharing the PDF for the last time. Can those who have not downloaded the PDF kindly please download this PDF again. Thank you so much, everyone. Let me just clear out the first custom scan. Yes, only 10 individual scans are added. Anonymous attendee, currently we do not have the respective higher high and higher lows. We'll surely look into it and look at if we can incorporate them. Vikram Periwalji and Realme model, please check the chat box. I have already shared the PDF over there. Hope you all had a very good session and hope you all I was able to provide some learning to all of you. And thank you so much everyone for being there consistently and for giving us your time to your trading journey. So let's meet next week again. Thank you so much.